Can you see this? Are you able to see this Yes, example? So we're going to solve this example. A gas mixture consisting of 60% hydrogen, 20% nitrogen, and the rest inert gas is passed over a suitable catalyst for the production of ammonia. And the reaction is given. The equilibrium constant Kp is equal to 1.25 into 10 to the power of minus 2. The pressure is maintained at 50 bar. Assume ideal gas behavior for the gas mixture. Determine the composition of gases leaving the reactor. Right? Similar question कल भी किया था हमने. Only data is different. Right? So let's see how many people can do it on their own. Then I'll solve it. Okay. How many people want to do it? Raise your hand. Okay. So let's do it. It should not take more than 5 minutes. It's a very simple problem. Okay. Karo. You know exactly what is to be done. Similar to what we did yesterday. इसमें बेसिस क्या होगा? What will sir, use the 1 mole of basis? gas mixture. 1 mole of gas mixture. Yeah, you can do it, but that will give you how much hydrogen? 0.6. Yeah, so it's an odd number, right? कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, nothing wrong with it. You can use 1 mole of gas mixture. You can use 10 moles of gas mixture. You can use 100 moles of gas mixture, whatever. Doesn't matter, you can use anything. करो. Whichever is convenient, you can use as a basis. सर, Yeah. वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को परफेक्ट नंबर करके कर सकते हैं ना? नहीं, जैसा रिएक्शन दिया है वैसा ही यूज करना रहता है. डोंट मैनिपुलेट दिस थिंग बिकॉज दैट विल चेंज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहता है? K इज इक्वल टू KY इक्वल टू क्या रहता है? P raised to minus 2. Right? That is your KY. If you change the stoichiometric coefficient, your power will change. And this Kp is given for this reaction, this equation. So these are related. You cannot change it. Always use whatever reaction is given, whatever form the reaction is given, use that only. There's a relation between this and this. वो चेंज किया तो Kp भी चेंज हो जाएगा. समझ में आया?
That is why this is given. Yes, sir. और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है फाइनल में एक बार, एग्जैक्टली सेम. For simplicity, I am going to take 10 moles of feed. बुक में 100 moles लिया है, इसलिए मैं 100 moles नहीं ले रहा हूँ. I want to do it differently. Let us do it differently. 1 mole भी ले सकते हो. You can take 10 moles also. I'm going to solve it using 10 moles. In this case, is hydrogen will be 6 moles. Nitrogen 2 moles. And inerts ये लेके करो, so that we can have the same answers, all of us. Find out what is the value of epsilon first. इसका हो जाएगा, वो रेज हैंड करेगा. Just epsilon. Then we'll do the mole fraction calculation. First, I want to see the epsilon value.
सर 2 वैल्यूज आ रही है हाँ, क्या वैल्यूज आ रही है? सर, एक 0.05816 एंड एक 0.878। ओके, ठीक है, लेट्स सी। और किसका हो गया? कौन, वैभव था क्या? यस सर। ओके। सर या एक की वैल्यू आ रही है 0.8708। ओके, ठीक है। और किसी का हो गया क्या? सर या वो N2 के यहाँ पे 2 माइनस 1/2 एप्सिलॉन आएगा ना? 2 माइनस 1/2 एप्सिलॉन। 1 मिनट। यस, यू राइट, 1/2 आएगा।
सर x2 का भी 6 minus 3 by 2. बराबर है, राइट। ठीक है अभी। And equation we know is k is equal to we can put इसमें क्या हो जाएगा 10 माइनस एप्सिलॉन, एक कैंसिल हो जाएगा, what we'll get is that is to 1.25. शरत से p न्यूज 1। ठीक है, इज दिस ओके? सर वो डिनोमिनेटर में 2 minus 0.5 एप्सिलॉन का स्क्वायर हो जाएगा ना? स्क्वायर हो जाएगा? क्यों स्क्वायर हो जाएगा? 0.5 आएगा ना, सॉरी। सर into 3 raised to 3 by 2. इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, वो दोनों, वो जो 6 minus 1/5 है ना, उसमें से हम 3 कॉमन लेते हैं तो फिर वो ओके ओके, पावर्स हाँ सेम हो ठीक है जाते हैं. ठीक है ठीक है, गॉट इट। बट फर्स्ट लेट मी राइट इट डाउन एज इट इज। इसमें गलती किया मैंने, यहाँ पर 0.5 आना चाहिए और यहाँ पर 1.5 आना चाहिए, देन वी कैन सिंप्लीफाई इट। ठीक है, ये ठीक है ना? देन वी कैन सिंप्लीफाई इट। तो एप्सिलॉन इंटू 10 माइनस एप्सिलॉन अपॉन ये 3 निकाला बाहर, राइट? जैसे वी कैन टेक आउट 3, राइट, कॉमन फ्रॉम हियर। यस सर. सो 3 रेज टू पावर ऑफ 1.5 हो जाएगा एंड 2 माइनस 0.5 स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस सर. Okay, so if you take this 10 epsilon square is equal to, what is this? 3 raised to power of 1.5 into 1.25. Okay, what is the value of this constant? 3.2476. 2 minus 0.5 epsilon चाहिए ना यहाँ पर।
What is this thing? इसका प्रोडक्ट कितना है? 0.8119. So we bring this here and we'll get 1.8119 epsilon square minus 13.2476 epsilon plus. ठीक है, तो एप्सिलॉन को दो वैल्यू आना चाहिए एक्चुअली, बराबर ना? बिकॉज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एप्सिलॉन शुड बी टू वैल्यूज, राइट? क्या आ रहा है वैल्यू एप्सिलॉन का? $6.783. 0.5285. अभी तो 0.87 कुछ आया था किसी का, सर मेरा ही. आपका ही आया था ना? अभी हाँ एक, सर. अभी क्यों डिफरेंट आ रहा है? मैंने कुछ गलती किया क्या? सर 1 मिनट में मेरा चेक करती हूँ. हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? सर मेरा 0.87 आया है तो हाँ, मैं कुछ एप्सिलॉन स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, बाकी दोनों कोएफिशिएंट अलग आए. must have done something wrong here, right? Must have done something wrong here. Then epsilon minus epsilon square is equal to two minus. सर वो 4 माइनस एप्सिलॉन होगा ना. सर वो जो 2 माइनस एप्सिलॉन है वहाँ पे 2 आएगा. 2 माइनस 2 एप्सिलॉन. यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हम्म, मल्टीप्लाई 3.2476 ओ या वो वाली. राइट, ये 4 आना चाहिए, बराबर, राइट, ये और 4. माइनस 2e. ओके, करेक्ट. Okay, so it will be like ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा. This will be ठीक है अभी. यस सर. Okay, so what is the value of epsilon now?
सर 8.233 और 0.8708 okay. Okay, so which one to use? Which value to select? Question is this, right? Any ideas? कैसे select करने का? Which value to use? This or सर this? Hmm. Okay, so let's do it this way. Uh, let's find y for both the cases, right? Let's see y of ammonia by both the cases. इसके लिए भी और इसके लिए भी. What will happen is y of ammonia is what? सर 0.87 ही होगा ना, क्यों लेकिन? because epsilon is always less than 1. मैं वही सोच रहा था. I have given you that rule, but I am doubting my rule as myself. I'll tell you the reason. Let's calculate y by both the values and see what we get for y. ठीक है? Then we'll discuss it. Okay? कर सकते हैं ना? Let's do it. What is the value of y? Y क्या है? Y ammonia epsilon upon 10 minus epsilon, right? इसके लिए कितना होगा और इसके लिए कितना होगा? Y nitrogen is 2 minus 0.5 epsilon on 10 minus epsilon, and Y hydrogen is 6 minus 1.5 epsilon. Let us find out values for both the values of epsilon and see what do we get. कितना आएगा बाय अमोनिया? क्या हो गया? कैलकुलेशन नहीं हो रहा है क्या? सर 4.6589. 4 point है ना? Right? Y nitrogen for this value of epsilon. सर वो नेगेटिव आ रही है. नेगेटिव आ रही है ये. हाँ, कितनी आ रही है वैल्यू? माइनस एक मिनट. -1.198. ठीक है. और इसके लिए हाइड्रोजन के लिए?
minus 3 point. Minus how much? minus 3.593. 3.5. See, that's why you cannot use this value of epsilon. तो जो रूल मैंने बनाया था वो बुक में देख के बनाया था, बट दिस रॉन्ग। इसके लिए क्या होता है कैलकुलेट 0.8708 के लिए? सर नाइट्रोजन 0.17138. 0.171, ओके। सर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सॉरी 0.17138, ठीक है। For NH3 0.0953. ओके, और हाइड्रोजन 0.51415. so we can select this one because y has to be less than 1, right? तो जो हमने रूल बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, आपको बताया था, that is wrong. And why it is wrong I can explain you now. So if you look at जो अब ये प्रॉब्लम की है हमने, we always said basis was always 1 mole or so, right? कहीं भी देखो पुराने वाले में बेसिस क्या था हमारा, 1 मोल ऑफ दिस 1 मोल ऑफ दिस, यानी इट वाज ऑलवेज लेस देन 1 और लेस देन 10। अभी हमने 10 मोल्स लिया बेसिस, राइट? रूल में कैसे बना रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, बट अल्टीमेट टेस्ट इज दिस वन, दिस अल्टीमेट टेस्ट कि y शुड कम आउट एज लेस देन 1। तो एप्सिलॉन का हमने रूल बना दिया 0.1 आना चाहिए, बट अल्टीमेट टेस्ट यही है, y कैलकुलेट करो कहाँ पर मीनिंगफुल आ रहा है वो देखने का, एंड दिस शुड ऑल एड अप टू 1। सर या एप्सिलॉन 1 से कम नहीं होगा ना सर, क्योंकि अगर हम कन्वर्जन निकालेंगे तो वो 100 से ज़्यादा थोड़ी ना आएगा। ठीक है ना, करते हैं ना, वो भी करते हैं, लेट्स डू दैट आल्सो, लेट्स डू। Your point is very valid. Let's look at conversion now. Let's see what is conversion. Z of nitrogen. क्या रहेगा? Absolute value of new nitrogen into epsilon upon n nitrogen at 0. ठीक है? New of nitrogen क्या है? -0.5. Epsilon is ओके, तो ये हो जाएगा इंटू 8 पॉइंट डिवाइड बाय ओरिजिनल नाइट्रोजन कितना है? 6 है ना? बराबर है ना? 60%, ओ 6 नहीं, 2 था, 2 है, सॉरी दिस इज 2। तो कितना आएगा कन्वर्जन? सर 2.058. Right, so it cannot be 2, it has to be less than 1. Conversion is always less than 1, और फ्रैक्शनल कन्वर्जन है ये, बराबर। और यहाँ पर लिया तो क्या आएगा?
What is the value? Hello, sir. Hello. Yeah. सर एकदम तब हम 0.87 क्यों नहीं ले सकते क्या? क्या होगा? 0.87 ही ले रहे हैं हम। 0.87 ही बोला मैंने लेने के लिए। And I'm telling you why we cannot take this Okay. value. Why we cannot take this value? That's what we are evaluating now. The reason why 0.87 should be selected, not 8.2. वो पहले का जो रूल बोला था ना, एप्सिलॉन 0.1 डिपेंड्स ऑन बेसिस। बेसिस चेंज होगा तो ये चेंज होगा। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू द रीजन। ओके, ये कितना आएगा वैल्यू यहाँ पर? सर 0.217। 0.217 sir. Right, so this is 0.217. This is correct value. This is wrong value. Right, conversion cannot be more than 1. अल्टीमेट टेस्ट यही है इसका। सर या अगर हमने बेसिस 1 मोल लिया तो एप्सिलॉन की वैल्यू सेम आनी चाहिए ना? एप्सिलॉन वैल्यू चेंज होगा बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। एप्सिलॉन इज व्हाट dn by n, right? Definition of epsilon is dn by n. n चेंज होगा तो एप्सिलॉन चेंज होगा। यहाँ पर बुक में किया है इसने 100 मोल्स लेके किया है। इज गेटिंग एप्सिलॉन वैल्यू एज 8.7। हमारा ओके सेम आ रहा है 8.7। 8.7 8.7 आया, हमारा 0.87 आ रहा है। इसकी जगह पर इन द बुक ही इज गेटिंग 8.7 नॉट 0.87 बिकॉज he has taken 100 moles as a basis। ये क्या होता है व्हेन वी कैलकुलेट कन्वर्जन? हाँ सर, मेरा बहुत कम आ रहा है। हाँ, बिकॉज यू हैव टेकन 1 मोल बेसिस लिया होगा ना, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अल्टीमेट टेस्ट इज इन कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन शुड बी लेस देन 1। फ्रैक्शनल कन्वर्जन देखा, राइट? इंटू 100 करके लेते, 21% कन्वर्जन हो गया इसका। यहाँ पर हो गया 200% हो जाएगा इंटू 100 किया तो। दिस इज रॉन्ग। दीज आर टू टेस्ट एक्चुअली। वो बुक में शॉर्टकट में बताता है कि ऐसे ये सिलेक्ट करो, बट ये रियल टेस्ट यही है कि y शुड बी एडिंग अप टू 1 समेशन ऑफ ऑल y's। नहीं, प्लस इनर्ट्स होगा ना इसमें। प्लस इनर्ट्स, इनर्ट्स कितना है? 0.5, 0.6, 6, 7, 8। हाँ, 0.2 था ना। इनर्ट्स कितना था? 2 मोल्स था, राइट? इनर्ट्स वाज 2 मोल्स ना, राइट? प्लस इनर्ट्स का मोल फ्रैक्शन होगा, बट दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। इट कैन नॉट हैव मोल फ्रैक्शन विच इज 4.67 माइनस एंड माइनस। ये एक टेस्ट है। दूसरा टेस्ट ये है कि कन्वर्जन शुड बी ऑलवेज लेस देन 100%। ठीक है, समझ में आया? एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इनर्ट कैसे निकालेंगे हम? वन माइनस समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऐसे निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इनर्ट्स, बिकॉज यू कैनॉट डायरेक्टली कैलकुलेट। 2 मोल्स है बट वी डोंट नो टोटल मोल्स कितना है। यू हैव टू कैलकुलेट कितना आएगा ये। इफ यू टेक दिस 1 माइनस अमोनिया माइनस नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन, 0.21907
Okay, so this is the mole fraction of inert. सब मोल फ्रैक्शन निकालिए, क्वेश्चन यही था, फाइंड आउट ऑल द मोल फ्रैक्शंस. ठीक है, एक्चुअली ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम ऑन इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, वो दिखाना था मेरे को. एक्चुअली ये इनर्ट्स का इफेक्ट है, राइट. अमोनिया का देखा था हमने पहले, राइट. दो तीन एक प्रॉब्लम इनर्ट्स का, अमोनिया का. वी गॉट कन्वर्शन ऑफ हाउ मच, कुछ 10% आया था. ये प्रेशर चेंज हो गया, बट स्टिल इट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट्स, क्योंकि फीड में इनर्ट्स है तो इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट्स. ठीक है, समझ में आया. तो ये जो है आंसर कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है, सो वी मे हैव टू समटाइम्स डू दिस टू एक्चुअली सिलेक्ट द राइट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन. अभी तक जितने प्रॉब्लम किए हम सिंपली पॉइंट लेस देन 1 लेके किया, दैट रूल इज नॉट करेक्ट. दैट वाज कन्वीनियंट, करेक्ट मिल गया था हमारे को लकीली आंसर, राइट. दूसरा ये हो सकता है कि जस्ट लुकिंग एट द ट्रेंड, हमने ऑलवेज लोअर वैल्यू यूज़ किया है एप्सिलॉन का, बराबर ना. इफ यू लुक एट ओल्ड प्रॉब्लम्स, लेट मी लुक एट ओल्ड प्रॉब्लम्स. एप्सिलॉन वैल्यूज क्या क्या था. एप्सिलॉन दो वैल्यूज कहाँ लिया था हमने, 1268. ओके, लिखा नहीं है मैंने. वी ऑलवेज सेड इज लेस देन 1, बाकी दूसरा दूसरा वैल्यू ज़्यादा होगा 1 से मेरे ख्याल से, राइट. व्हेन यू सिलेक्टेड दीज वैल्यूज, राइट, द अदर वैल्यूज मस्ट बी मोर देन 1. तो हमने ऑलवेज सेलेक्ट किया लोअर वैल्यू, दैट इज़ अ ट्रेंड आई सी. बट एक्चुअल टेस्ट इज दिस ओनली कि ये इसमें डाल के देखने का y बराबर आ रहा है कि नहीं और कन्वर्जन बराबर आ रहा है कि नहीं. ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर. ठीक है, नहीं है तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so let's solve this problem. This actually shows the effect of product on the reaction mixture. The gas mixture which contained 1 mole CO, 1 mole water vapor and 1 mole CO2. 1 mole CO, 1 mole water vapor, 1 mole CO2 is undergoing reaction at 1100 Kelvin and 1 bar. Reaction ये है, so reactant ये है, ये product है, but product is also available in the feed. So it will show the effect of product in the feed. Equilibrium constant is K equal to 1. Assume that the gas behaves as ideal gas. Calculate fractional dissociation of steam and discuss the effect of presence of products on the equilibrium conversion. ये पहले प्रॉब्लम किया हमने without product. So now we are going to solve it with product. ठीक है, सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, करो.
ठीक है, कर सकते हैं। लेट्स डू इट। Once you finish it, raise your hand. सर 0.33 एप्सिलॉन। कितना आ रहा है? 0.33। ठीक है, गुड। पॉइंट ठीक है, गुड। ठीक है। यस सर।
So if you look at the old problem, ये हमने पहले भी किया था question. Let's see. ये किया है, right? नहीं, ये भी नहीं. Let's see. One more problem. Okay. So this is a problem which we had done, same problem, right? यहाँ पर 1 mole of CO, 1 mole of water vapor था. There was no, in the first part there was no inert or there was nothing, no product, right? तो हमारा कितना आया था? 50% आया था, बराबर. Epsilon was 0.5 and Z was 50%. And now when we add the product, what we get is 33%. ठीक है? So what you see is, if you add the product, the conversion actually decreases. और recycle it. Recycle किया तो conversion decrease हो जाता है. प्रोडक्ट कैसे आता है? व्हेन यू रिसाइकल इट, राइट? कन्वर्जन नहीं हुआ तो रिसाइकल करते हैं तो उसमें कन्वर्जन और कम हो जाता है. ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑन व्हाट यू हैव डन टुडे? फर्स्ट पार्ट था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. हम हरदम एप्सिलॉन लेस देन 1 लेते थे, बट आई थिंक दैट इज द रॉन्ग generalization. I don't think we can use that. Actually, we have to use, I think generalization can be that you have to use the lower of the two values. Higher value से गलत आंसर आता है. That is one conclusion I can draw. Our other test is actually putting it in that y and finding out y or conversion. Conversion should be less than 1. That is the ultimate test of epsilon. You cannot have conversion which is more than 100%. ठीक है? Any questions, doubts on what we have done today? Interesting problem. कभी सोचा नहीं था मैंने भी ऐसा होगा करके, बट ठीक है. बिकॉज आई थिंक वैभव यू टुक 1 मोल ना, क्या लिया था बेसिस फॉर द प्रीवियस प्रॉब्लम? सर 1 मोल. 1 मोल लिया, राइट? सो यू गॉट एप्सिलॉन एज 0.087, बराबर ना? यस सर. राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस क्या आएगा एप्सिलॉन, बिकॉज अल्टीमेटली कन्वर्जन में वो जो रहता है नीचे में NI0 रहता है, राइट? इफ यू टेक 1 मोल एज बेसिस, इसमें क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन हो जाएगा 0.6 मोल्स, राइट? बराबर ना? आपका 0.6 मोल्स होगा NI0. नाइट्रोजन के लिए 0.2 होगा. हाइड्रोजन के लिए 0.6 होगा. सर नाइट्रोजन का 0.2. 0.2 था, राइट? So because if you see Z is equal to absolute value of nu I into epsilon divided by NI0, right? NI0 चेंज हो गया तो epsilon चेंज होगा, right? Let's go back there and see how we can explain it actually. Yeah, this is what is changing, right? If you change the basis, this is what changes, right? अगर मैंने 10 moles लिया तो different हो जाएगा, 100 moles लिया different हो जाएगा, 1 mole लिया different हो जाएगा. So when I change this, this has to change because this is not going to change. So basis पर डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन वैल्यू क्या आएगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी यूनिवर्सल सेम थिंग व्हेदर वी चेंज व्हेन वी चेंज द बेसिस. अभी तक क्या था? वी वर चेंजिंग यूजिंग बेसिस एज 1 मोल ऑफ दिस प्लस 1 मोल ऑफ दिस, व्हाटएवर. इट वाज ऑलवेज सिंपल सॉल्यूशन था हमारा. वी वर अज्यूमिंग कि एप्सिलॉन शुड बी लेस देन 1, बट आई थिंक इट इज लोअर वैल्यू ऑफ द टू. आप घर जाके चेक कर लो सब में एप्सिलॉन वैल्यूज 2 कौन सा है.
I'll also do that and we can discuss it on in next week. Okay. Okay, so let's stop here.